So hi, good evening everybody. This is Vishwajit Datta, Director Success Ahead Education Services, the Clatologist. This video is with respect to Clat 2024. I'm sure that all those people, वो सारे बच्चे जो Clat 2024 अभी लिखने वाले हैं, they must have prepared their syllabus completely. 100% I'm sure कि सबकी तैयारी हो गई होगी. 3rd December 120 questions 120 minutes. So calculation is in your mind, and believing this fact that we have a lot of opportunities to come in the national school, believing this fact that you have a lot of things that you must be dreaming and you are going to fulfill them in the national colleges, ये सोच कर आप इस फील्ड में आए थे और मुझे लगता है कि उस हिसाब से आपने तैयारी कर ली होगी. So I believe that when the preparation is done, you must be living within that atmosphere. All that dream, all that calculations, all that preparation, all that energy with which you have entered into this field. I hope that that aura must be there in your mind. So you must be realizing and you must be living that atmosphere within you. And that atmosphere precisely going to help you to come out of this. See, an examination can be considered as a chakravyuh. You are going to fight in this exam. You are going to present the best of you that you have in the exam, in that 2 hours of time. And you are going to clear that chakravyuh and would like to come out successfully in the exam. Okay? So, वो जो preparation है, उस preparation का atmosphere आपके दिमाग में बनना चाहिए. All set and done, everything is prepared. मैं कुछ भी कर सकता हूँ. I'm not worrying. मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, so अब मेरे को डर नहीं लगता. See, the moment we realize that at this point of time there is no looking back and I have no other options. Okay, next month on 3rd of December I have my exams. So you do not have anything left, I'm sure. और यदि कुछ रह भी गया होगा, which I believe that in the time to come you are not able to cover it up. If everything is done, it's done forever. अब इसी के साथ आपको जाना है, पेपर देकर आना है. 2-3 things that I believe is very important, and as a teacher I must tell you, because you are going to write an exam. When you write an exam, it is not just an exam for you, it is an exam for lot many people as well at the same time. It's an exam for you, it's an exam for the family, it's an exam for the institution where you are preparing, it's an exam for the parents and lot many people as well, whom you think that they are looking up to you for that exam कि हाँ ये clear करेगा तो मैं इसके बाद तैयारी करूँगा. Maybe the young ones, the young generation which is coming behind you, they must be looking at you that if you clear the exam, now I'm going to follow your footprints. ऐसा कुछ होगा. तो ये सारी चीज़ों के साथ you are going to write this exam. तो आपके पास यदि opportunities भी है तो साथ में burden भी है और आपको उन्हीं burden के साथ आपको पेपर लिखना है. Okay? So you need to have that maturity. तो आपको maturity के साथ उतरना, और उसका केवल ये मतलब है मेरा कि मिराकल है तो होगा है तो नहीं होगा. यदि मिराकल होगा तो उन लोगों के लिए होगा जो ये सोच रहे होंगे दैट आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जाम, और देखो मैंने जो पढ़ा और एकदम से आ गया. और ऐसा होने के बिल्कुल बहुत कम चांसेस है. ऐसा यदि मैं कैलकुलेट करूं तो केवल एक ही सेक्शन में हो सकता है, दैट इज करंट अफेयर्स, दैट इज जनरल अवेयरनेस. बाकी 4 सेक्शन में मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, आई मीन क्रिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग प्लस इंग्लिश, इसमें तो होगा नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पैसेजेस दैट यू आर गोइंग टू सी इन द पेपर, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना ही वो किसी कोचिंग सेंटर के मटेरियल में मिलेगा. आई एम 100% श्योर फॉर दैट. नंबर 1. नंबर 2, मैथमेटिक्स का ऐसा सेक्शन है जो कि ओवर द टाइम पीरियड आपको हेल्प करता है. सो इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, एंड आप में हिम्मत भी नहीं होगी कि उसको आप उठाओ. पर यदि आपने प्रिपेयर किया तो आप उठाओगे. तो अब जो है ना, केवल आपका और पेपर का टेस्ट है, दैट हाउ मच यू फील दैट यू आर कंटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट दिस विथ माई स्ट्रेंथ आई एम गोइंग टू राइट दिस पेपर. मैंने जितनी पढ़ाई की है मैं सब भूल गया हूं ना, केवल मैं अपने से पेपर देने जा रहा हूं
I have become a complete entity in myself, having the whole world inside me, and with that I'm going to write this exam. With that feeling you have to write this exam. डर के तो काम नहीं चलेगा. तो पेपर में मिराकल होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है. तो इसलिए आप में से कोई भी सोच रहा है कि मिराकल होगा तो हो सकता है थोड़ा सा जनरल नॉलेज में आपका पढ़ा हुआ आ जाए, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा मिराकल होगा. सो डोंट एक्सपेक्ट एनी मिराकल टू हैपन इन द नेक्स्ट few days or in the examination as well. So all that is going to happen is the outcome of your preparation. Now this is an input and output game. तो जो आपने पढ़ा है वही आपको निकलेगा, पर जो आपने पढ़ा है पढ़ने के बाद यदि आप अपना न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर कर पा रहे हो, ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू टू not to evaluate things. I am asking you, you are evaluating with the help of your understanding, with the help of your knowledge, with the help of your wisdom. And here wisdom is nothing but the sum total of all that you have studied, the sum total of all knowledge that you have collected from most of the people who taught you. With that collective wisdom, when you are preparing for the exam, what is all that you are going to bring from the exam is that which is going to make a change in the exam. तो उस ऑरा के साथ, उस एटमोस्फेयर के साथ आपको पेपर लिखना है. मन से डर को हटा के, यू नीड टू बी सिंगल, मोटिव ओरिएंटेड, फोकस ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड, क्वेश्चन ओरिएंटेड. जितना माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप जाके पेपर को कर सकते हो, यू हैव टू ब्रिंग दैट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इन यू, एंड विद दैट यू हैव टू राइट द पेपर. ओके, नाउ सेकंड थिंग which I would like to point out here is that 120 questions है. तो आई एम श्योर कि यदि आपने 150 क्वेश्चन का पेपर देखा है, यदि आपने 200 क्वेश्चन का पेपर देखा है, बिकॉज द काइंड ऑफ पेपर दैट यू आर गोइंग टू राइट, you will 100% sure that your ancestors, that means the people who have wrote this paper 3-4 years back, they must have written a paper of 200 questions. Then people have written a paper of 150 questions. Now this year you are going to write a paper of 120 questions, isn't it? So what I am saying, that if somebody can finish the paper with 200 questions, you are 100% going to finish the paper in 2 hours of time, those 120 questions. जब 200 का पेपर होता था ना, या 150 का पेपर होता था, आई एम श्योर आप इस बात को एनालाइज कर चुके होंगे दैट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू कवर 120 क्वेश्चंस. If somebody wants to select in the exam, that means doing 120 questions is a very doable thing in the paper. You can do it. Okay. So majorly the people who are going to attempt this year's paper, they have this mindset that we are going to finish the paper. हम 120 में से 120 क्वेश्चंस करेंगे, प्रोवाइडेड दैट आप मैथ्स को पूरा कर रहे हो. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स को कम करते हैं. वो सोचते हैं कि चलो आप 5 करेंगे, 6 करेंगे, 8 करेंगे, जितना एक्यूरेट होगा उतना करेंगे. But you will majorly find that people would have a time to assess the whole paper within that time limit. तो 120 क्वेश्चन में से 120 करना is not going to be a tough task this year in the paper. तो बच्चे करेंगे, आप करोगे. Okay? So the process of selection is tough this time. Believe my words. The process of selection is very tough. That means the opponent who is sitting after you or before you in the examination hall, he would be attempting the paper the way you are attempting. So obviously the accuracy is going to matter a lot. With what accuracy you are writing this paper. Now analyze the marks that you have done and figure it out what is the best accuracy with which you have written the paper. Okay, so 120 questions, attempting all 120 questions. Okay, with 80% of accuracy. Well, it's a 96 questions. Correct. And 24 wrong. 24 by 4 is equal to 6. The net score would be 90, is a very safe score. So 120 questions with 80% of accuracy is a very fantastic way of passing the exams without having any problem. Now my dear friend, 80% of accuracy is a very complex term I am telling you. Because for some people to get 80% of accuracy is not an easy task. It's a tough task. क्या होता है ना, हम अपने घोड़े भी वैसे ही दौड़ाते हैं, जितनी लंबी हमारी जर्नी होती है ना, वैसे
यदि आपकी जर्नी यदि बहुत लंबी होगी ना तो आपने घोड़े को तेज दौड़ाओगे, बिकॉज यू हैव टू रीच योर डेस्टिनेशन ऑन टाइम। आप लेट नहीं हो सकते हो। तो जब 200 का पेपर होता था ना तो सब अपना घोड़ा मतलब दिमाग वैसे ही दौड़ाते थे कि भाई 2 घंटे में 200 क्वेश्चन निपटाने, कम से कम 180 का अटेम्प्ट तो देना ही देना है। फिर आपकी जर्नी का लिमिट थोड़ा कम हुआ, 150 क्वेश्चन का पैटर्न है। फिर आपने अपने घोड़ों को दौड़ाना चालू किया, छोटा कर दिया आपने, मतलब जो आपके जंप थे वो आपने छोटे कर दिए, मतलब घोड़े धीरे धीरे दौड़ रहे, क्योंकि 150 क्वेश्चन करने ना अब 120 क्वेश्चन करने। तो 120 क्वेश्चन करने तो हो सकता है आप थोड़ा और स्लो काम करो, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि पहली बार जो बच्चे पेपर लिख रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो चले पेपर में, थिंकिंग दैट डूइंग 120 क्वेश्चन इज नॉट ए टफ टास्क। तो माय डियर फ्रेंड, इफ यू हैव डन योर मॉक्स कंप्लीटली, यदि आपने अपने मॉक्स अच्छे से लिखे हैं तो देर इज नो पॉइंट गोइंग स्लो। स्लो जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। यू हैव टू बी लिटिल फास्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यू हैव टू बी लिटिल फास्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो थोड़ा सा फास्ट रहना है आपको और मूवमेंट आगे बढ़ाना है। स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकता है, आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाओ, पहले मुझे लीगल रीजनिंग करना है, फिर मेरे को जीके करना है, फिर मेरे को इंग्लिश करना है, फिर मेरे को क्रिटिकल रीजनिंग करना है, फिर मेरे को मैथ्स करना है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज नाउ यू हैव ऑल दैट स्ट्रैटेजी इन योर हैंड। वो ब्लू प्रिंट आपने बना रखा होगा कि भाई मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ, दिस इज वॉट माई टैक्टिस विच आई एम गोइंग टू फॉलो इन द पेपर। बस मैं उसी को फॉलो करूंगा, अब मैं कुछ नया चेंज नहीं करूंगा। आपने वो बना लिया होगा आई एम श्योर, तो आप उसी को फॉलो करोगे। बट द पॉइंट इज यू नीड टू बी लिटिल फास्टर इन द पेपर। ऐसा नहीं कि पेपर आपसे होगा नहीं। 120 क्वेश्चंस को 120 मिनट में करना इज नॉट अ टफ टास्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपने देखा है लोगों को बड़े पेपर करते हुए। तो आपके दिमाग में ये बात ऑलरेडी है दैट आई कैन डू इट। मैं 120 क्वेश्चंस 120 मिनट में कर लूंगा 100%। तो भी आपको थोड़ा सा फास्ट रहना, बिकॉज 120 का पैटर्न पहली बार हो रहा है। तो ये हो सकता है कि पेपर में थोड़ा सा लेंदी, पेपर थोड़ा लेंदी हो। तो जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप पहले से बना के रखना दिमाग में कि पेपर में पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई नीड टू बी लिटिल फास्टर इन द पेपर। दैट मीन्स आई विल नॉट बी स्लो इन द पेपर। मैं पेपर को मूव करूंगा। दैट मीन्स आई विल डोमिनेट द पेपर, आई विल राइट द पेपर। ओके, ऐसे नहीं कि पेपर मेरे को खींचता हुआ लेके जा रहा है, नहीं, आई विल रन ऑन द पेपर सो दैट आई कैन फिनिश द पेपर। तो पहला टारगेट पेपर फिनिश होना चाहिए, और पेपर फिनिश होने के लिए आपको थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा। ओके, 80% ऑफ एक्यूरेसी कोशिश करिए, नहीं तो 75% ऑफ एक्यूरेसी। यदि ऐसा लगता है तो 70 to 75% ऑफ एक्यूरेसी कुड ऑल्सो वर्क इन द पेपर, प्रोवाइडेड दैट योर अटेम्प्ट विल नॉट बी 100%। व्हाट आई मीन बाय दिस, सो क्वेश्चंस यदि आप करते हो और यदि आप 75% एक्यूरेसी से करते हो तो 75 करेक्ट और 25 गलत, बहुत नीचे आ जाएगा स्कोर। ओके, 110 करेंगे विथ 75% ऑफ एक्यूरेसी तो गाड़ी थोड़ी बन सकती है। दैट मीन्स ये पेपर हायर अटेम्प्ट पे काम करेगा, लोअर अटेम्प्ट पे ज्यादा काम नहीं करेगा। मतलब यदि आप ये कहते हो कि सर माई एक्यूरेसी इज 70% एंड आई एम गोइंग टू डू 100 क्वेश्चंस इन द पेपर, तो 70% विथ 100% ऑफ एक्यूरेसी वुड गिव यू 70 मार्क्स, माइनस जो आपके गलत हो रहे हैं 30। यदि गलत हो रहे तो आपका 7.2, 7 4 28, 7.5 आपके और चले जाएंगे, तो 62.5 पे आपकी गाड़ी आ जाएगी 100 क्वेश्चंस करने के बाद भी। तो दिस टाइम द एग्जाम इज ऑन एक्यूरेसी, तो ट्राई टू कीप योर एक्यूरेसी इन योर ग्रिप। एक्यूरेसी स्लिप होता है तो आप बाहर हो जाओगे। तो एक्यूरेसी इज द मेजर फैक्टर फॉर दिस ईयर्स एग्जाम्स। ओके, और यदि एक्यूरेसी कम है तो दिक्कत होगी आपको। तो एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। तो 120 क्वेश्चंस ऑल अटेम्प्ट या 110 115 अटेम्प्ट विथ 80-85% ऑफ एक्यूरेसी इज ए गुड bet and you can get in national law school top 3। ठीक है, इस पार्ट में आपको ध्यान देना है। एंड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज व्हेन you know that everything has been done, I believe that put your focus in current affairs, do left and right, जितना दम से आप लगा सकते हो उतना दम से लगाओ। एंड आखिरी के इन दिनों में रिवीजन करना प्लीज मत भूलना करंट अफेयर्स का, because revision is also the key. People failing to revise the lessons would repent a lot because they know that they have already invested their time back in their preparation. And now if you are not revising, that means you're hitting
on your own, which will definitely cause a lot of harmful effect, because you know that you have given lot of your hard work to such preparations which you have left. तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो नया ना पढ़ के रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है. वैसे भी पेपर में पढ़ने लायक कुछ है भी नहीं, आपको केवल अपने सेंस से पेपर देना है. तो आप जितना नॉर्मल नेचुरल तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे, आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम्स. ठीक है. नाउ फॉर एनी क्वेरी, we the clatologist at Success at Education Services are just one step ahead and also one step away. So you can call us at any point of time at 9329620356 and ask for any query that you want to resolve. We're happy to do for you, and all the very best. And also the aspirants who are right now preparing, because of being working in this platform for a year of time, looking for Clat 2025, new batches are starting, and somebody would like to get the content in a new pattern, absolutely new, based on what is happening in the society, in the country, across the world, across all the 5 different sections, including maths. Okay, you can definitely contact us and be a part of the Clatologist, that is Success at Education Services. Do subscribe our channel, that is the Clatologist Success at Education Services, and be in touch for more useful videos that we're going to see in the time to come. Thank you so much. May God bless you, and bye bye. Good night.